Good morning, everybody. Thank you so much for tuning into Avid Adventures. My name is Avi, the branch, and I hope all of you are having a good day, or night, or evening, whatever time you may be watching this video. So, right now, I am at this Playzone Cafe where I generally stop prior to leaving for my regular cup of chai. So, I've had that, and so today we are going to a place called as Savandurga Hills, which is about 70 odd kilometers from where I stay. So as you can see here, I don't think you can see it, but on the Google Maps it says 1 hour 56 minutes for 70 kilometers, which is which means that there is a lot of traffic on the way. So, and yes, for the day, as far as the date is concerned, today's date is 10th of July 2021. So I've already done most of the things. As you can see, I've already mounted my tank bag on the bike. I have cold started the bike as well, and I have set the trip to 0 when I started from my house. Now since that we've done, now let's just go on with our with my I told you, as I said in the previous video also, I am habitual of sort of performing a mental checklist before I begin my ride. So it starts with phone. The phone is over there. Wallet, let's see where the wallet is here. Phone, wallet, then you can have another item which I used to call as chashma or my sunglasses. So sunglasses are here. I have all the documents of the bike which are on the phone, and I have it in the bike as well. I've got plenty of fuel. I have water to drink, and what else? Helmet straps. Is my helmet strap in? No, it's not in. So see, these are all these small things may seem insignificant to many of you guys out there watching the video, but if you're wearing a helmet, putting on a helmet strap is as important as actually wearing one. I mean the helmet, not the strap. And you need to make sure that the strap has adequate tension, so that in the case of your fall, the helmet does not actually bounce off your head and you injure your head itself. So these are small things which I believe everybody should follow. Have a small mental checklist of your own. Currently I am crossing through HSR layout, and I am not sure, but is this NH44? I mean, Google Maps pehle was sort of labeling it like NH44 if I read it correctly. So if it is, then a national highway is passing through one of the very nice places in Bangalore. Nice. मेरे को बहुत अच्छी लगती है जगह HSR layout. I mean, अलग ही रौनक होती है इस जगह की रात में अगर जब आओ पहले ना. अभी तो चलो कोविड के चक्कर में काफ़ी बुरा हाल था, बट आई मीन यूजुअली यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है मार्केट में. अच्छा लगता है यहाँ पे रात को आने में. So the place that we are going today, the Savandurga Hills, it is the highest monolithic hill in Asia, and I am not exactly, I don't exactly remember the elevation of the hill, but I will surely pop that up here somewhere. Okay, first avoid the pothole, somewhere over here or here in the video. And it is quite, I may be wrong, but I think it's close to 4,000 or 4,500 feet, which basically means that we're gonna be getting some good inclines while we are on our way. तो मज़ा आना चाहिए आज राइड में. अरे यार लेफ्ट ही चला गया भाई. Oh boy, it almost took me 15 minutes, man, to get through the toll tax, but it was all worth it because we are now on the nice road. Really nice road. And if
if you get a bike like Adventure 390 on a road like this, just enable the quick shifter plus. ये क्या कर रहा है यार ऑल्टो वाला? भाई डिजायर बार निकालना, जगह तो है क्या यार। Just quick shifter pro activate करो and just keep on going. 80, 90, 100, 90, 100. That's more than enough. ये देखो भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट में बंदा काम करता है, एटलीस्ट बैग तो माइक्रोसॉफ्ट का है, बट इतनी अच्छी बाइक है और देखो हेलमेट भी उतार दिया। मतलब and I think it is the responsibility of the owner of the bike to get a good quality helmet for the pillion as well, because अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ बाइक पे लेके जा रहे हो जिसके पास हेलमेट नहीं है, तो आप उसको कुछ ऐसा सस्ता सा हेलमेट नहीं खरीद के दे सकते, लगाने के लिए नहीं दे सकते, एटलीस्ट नॉट ऑन रोड्स लाइक दिस वेर यू आर राइडिंग। आई वाज एट 110 बैक देयर, आई थिंक 110, एंड दिस गाय ओवरटुक मी, probably this guy overtook me, so you can imagine what speed he must be riding at। नहीं क्या ही बना रहे हैं यहाँ पे, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, आई थिंक फ्लाईओवर या मेट्रो। अरे 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 भाई, ऑल गुड भाई, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, कहाँ पहुँचना है? बहुत गंदा ट्रैफिक मिला यार पीछे, आई मीन बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ लगी हुई थी। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग ऑन अ बाइक इन ट्रैफिक लाइक दैट इज कि अगर थोड़ा सा भी रोड पे पानी कीचड़ इधर उधर हुआ, it becomes very difficult to maneuver the bike around the vehicles which are already there. So वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया obviously, बोरिंग पार्ट, बट अभी मेरे को 47 मिनट्स दिखा रहा है 29 किलोमीटर्स के लिए गूगल मैप्स, एंड नीली नीली सड़कें दिख तो रही हैं। देखते हैं आगे से भाई, आगे क्या सीन मिलता है। ओ स्कोडा ऑक्टिविया, ये बहुत दिनों बाद दिखी यार गाड़ी, क्योंकि यार जब मैं क्लास 6-7 में था उस टाइम पे बहुत दिखती थी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो गूगल मैप्स इज इंस्ट्रक्टिंग अस टू टेक अ लेफ्ट हैंड टर्न आगे जाके, जो कि मेरे को दिख तो रहा है, बट तो हम लोग उस तरफ से आए, वी वेंट अहेड, टुक अ यू टर्न एंड देन केम बैक। नाउ गूगल इज आस्किंग अस टू गो हियर एंड आई डाउट दैट दिस इज द राइट वे। इज दिस भाई, ये कहाँ, पता नहीं कौन सी सड़क पे लेके जा रहा है यार गूगल। नाउ हियर वी विल टेक अ लेफ्ट हैंड टर्न। ओके चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। अभी I think riding through a middle of a forest, and just look at the roads तो अच्छी है, no doubt about that, and I think roads से ज़्यादा अच्छा। oh I see the hill now, I think I see the hill, yes hill दिख गया मेरे को, I don't know GoPro में दिख रहा है कि नहीं, but ऐसी रोड भी मिले ना अगर दोनों तरफ से पेड़ हैं, बड़ा मज़ा आता है चलाने में। जा रहा हूँ वैसे वैसे रोड्स के साथ, रोड्स तो चलो वैसे ही हैं, बट काफ़ी अच्छा व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। सामने क्लाउड्स इतने अच्छे दिख रहे हैं। ओ दिखा आई जस्ट स्पॉटेड द हिल, लेट मी शो यू गाइस। भाई साहब आई एम नॉट श्योर कैमरा जस्टिस कर पा रहा है इसको, बट बॉय ओ बॉय द व्यू लुक्स अमेजिंग। इंस्टाग्राम स्टोरी तो बनती है यार, एक स्टोरी तो बनती है, एक स्टोरी तो बनती। Okay, so I am on this road for the past 15 minutes, and ऐसी roads हैं। After that dam, उसके बाद से you just go straight and you need to take a right hand turn,
और उसके बाद से यू गेट दीज रोड्स। नारियल पानी पियेंगे यार वापसी में। यस। ओ हो भाई, यहाँ पे गोप्रो तो जस्टिस नहीं करेगा यार। आई डोंट थिंक गोप्रो जस्टिस करेगा। क्या व्यू है। ओह नाइस यार, हमें Okay, so look at that. I have reached Savandurga Hills. And let's look at the numbers. So, it took me. This trip was 75 kilometers. Trip time 1 hour 47 minutes, and a fuel consumption of 28.4 kilometers per liter. So here I am right now. There are a couple of people here as well, and the thing is that we have the option to actually go all the way up till there, but उसमें scene ये है कि you have to trek. There are no roads which go all the way up there. So what you need to do is basically you need to come and trek up, and it takes about 4 hours to go up and down. So I don't have that much time with me, so I'm just gonna head back, click a couple of good pictures, maybe get a good time lapse, and then we'll be on our way back. ओके सो वी आर ऑल सेट नाउ। मैं काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। द हिल इज़ ब्यूटीफुल। couldn't unfortunately couldn't go up, so probably some other time. So now the plan is to head home, and Google Maps says 66 kilometers 1 hour 49 minutes. देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। चलो भाई, let's go. Savandurga Hills is a very nice place to come, guys. If you're planning to come here, and if you're just planning to come for the views, and when I say views, I mean views of the hills, view of the hill, then I think you can pretty much start off at any time you want to. But if you're planning to actually go till the top or trek the hill, do the Savandurga Hill trek, then I think you should try to reach this place by 9 o'clock. At least 9 o'clock. If you are coming earlier than that, then obviously it's helpful. But if you're planning to scale it, I think 9 o'clock should be your target, so that you can come. And it takes about 4 hours to go up and down. So 4 घंटे में आपका ऊपर से नीचे आने में आपको लगेंगे, तो अच्छा रहेगा। आई कैन ओनली इमेजिन। ऊपर से नंदी हिल्स में गया हूँ, नंदी हिल्स के टॉप से इतना अच्छा व्यू आता है। आई एम सॉर्ट ऑफ रिग्रेटिंग इट कि मैं थोड़ा पहले क्यों नहीं आया। तो अगर प्रॉब्ली पहले आया था तो आई वुड हैव ऑल्सो डन द ट्रैक, बट कोई नहीं। सिंस द ड्राइव इज़ सो गुड यहाँ तक कि, सो आई वोंट माइंड एक्चुअली कमिंग हियर अगेन। ओके, सो बीच में थोड़ी सी एक्चुअली बारिश होने लग गई थी, जिसकी वजह से आई हैड टू पुट माई कैमरा इनसाइड, बिकॉज आई यूज़ अ मीडिया मॉड फॉर रिकॉर्डिंग द ऑडियो, एंड मीडिया मॉड इज़ नॉट वाटर प्रूफ। सो काश गोप्रो ने वाटर प्रूफ बनाया था, बट येस आई एम लुकिंग इन टू वेज इन विच आई कैन मेक इट वाटर प्रूफ। मैं घर आ गया हूँ, आई रीच्ड होम अच्छे से, कोई इशूज़ नहीं हुए। फॉर दिस ट्रिप, सॉरी नॉट दिस ट्रिप, फॉर दिस राइड आई डिड 142.3 kilometers both ways. And I don't remember the trip time. I'll put the picture of the console of the bike somewhere over here, so that you can take a look. And the fuel consumption of the bike was 29.8 kilometers per liter, which I think is kind of low, because I was not revving the bike much, but I believe the traffic क्योंकि इतना मिला रास्ते में, इसी वजह से the fuel consumption actually shot up. So that's it for this vlog. First of all, thank you so much if you have been that you took out the time from your day to watch this video of mine. I really appreciate it. So if you liked the video, please do leave a like, comment, subscribe if you haven't already. So since the lockdown has been lifted in Karnataka now, so I'm making it a point to at least
out of one weekend at least go once, out of one weekend at least go out once, and my target will be to at least roll out at least a video per week on this channel. But that is the target, but I want to roll out at least 2 videos, so that is what my plan is. But rest assured, minimum I believe 1 video will be coming per week on the channel. So thank you so very much again for tuning in. Stay safe, stay happy, and I will see you in the next one.